تو ہم کافی پریشان ہو گئے. ہم نے کہا شاید اس کا کوئی آئی سائڈ کو پرابلم ہے. تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے. وہ کہتے کہ نہیں یہ آئی سائڈ کا پرابلم نہیں, یہ برین کا پرابلم ہے. ہم برین والے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے برین کے اندر ٹیومر ہے. تو ہم نے پھر اس کو سی ٹی اسکین کرا تو برین ٹیومر نکلا. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو بتایا, وہ کہتے ہیں اس کا 2 جو ہے نا وہ آپریشنز ہوں گے. ایک ہوگا کہ اس کے آئی سائڈ وہ بچائی جائے, اور دوسرا یہ کہ ٹیومر کی سرجری ہم کریں گے. تو آئی سائڈ کی وہ ہم نے کروا لیا, اس کا آپریشن کروا لیا. لیکن جو ٹیومر کا نا وی آر ویری اسکیئرڈ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ اس کا آپریٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کس جگہ سے آئے؟ فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد کتنی دور ہے یہاں سے؟ فیصلہ آباد یہاں سے میرا خیال ہے کوئی 400 کلو میٹر ہوگا. 400 کلو میٹر. کتنے ٹائم لگ جاتا ہے؟ تقریباً 5.5 گھنٹے لگے. کتنے عرصے سے سنس سنڈے. لاسٹ سنڈے. جی لاسٹ سنڈے. کتنے دن ہو گئے آج؟ تقریباً آج 30 دن ہے. تو یہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے پیر صاحب کا, اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیر صاحب کے بارے میں فرائیڈے کا جمعہ پڑھا تھا. جمعے کے بعد میں نے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کا وہ سرجری نہیں کروانی, تو ہمیں ایسا راستہ دکھا کہ آپ کے کلام سے ہمیں نا شفا ملے, کیونکہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے. تو میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ورڈ ہوں. نہیں, آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ. جی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو میں نے نیٹ پہ دیکھا کہ پیر صاحب کا یہ تھا peersmon.com. تو وہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا. پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کلپس دیکھی. تو مجھے نا وہاں سے پھر اعتماد ہوا لوگوں کی کہ میں نے مختلف لوگوں کے انٹرویو سنے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے برین ٹیومر تھا. تو کافی ڈاکٹروں کے پاس ہم گئے ہیں. اب انہوں نے نام لیا کہ شوکت خانم ہاسپٹل گئے ہیں, راول پنڈی دکھایا ہے, لیکن ان کی سرجری بھی ہوئی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی جو ہے نا ٹیومر وہ پھر بڑھ رہے ہیں, پھر ٹیومر اور بھی زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن وہ جب انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا پیر عثمان سب سے کروایا تو وہ کافی صحت یاب ہو گئے. تو وہ مجھے کافی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد تھا کہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے تو اس میں مجھے یہ سب کچھ آیا. تو میں نے پھر اپنے گھر والوں کو فورس کیا کہ ڈیڈ وی ہیو ٹو گو ٹو پیر عثمان صاحب, تو اپنے فار ٹریٹمنٹ آف مائی ایلڈر سن. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں ٹیکسٹائل مشینری کی. Introducing you the young master. His name is آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن علی. Look how confident this boy is. محمد حسن علی, ماشاءاللہ. حسن آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1B. 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 1 is اللہ. آپ 1B میں پڑھتے ہیں. 1B میں پڑھتے ہیں. کون سا آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ فیصل ہائی اسکول فیصلہ آباد. فیصل ہائی اسکول فیصلہ آباد. ماشاءاللہ. گڈ. میں نے آپ کو کس کر لیا وداؤٹ آسکنگ یو. آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ گڈ. فرینڈس گڈ. شاباش. Just wanted to introduce you this young boy. Look how confident this young boy is and how confidently he was speaking. His father, he is having a great hope that his son would be recovered inshallah, and he would take him cured from this killing problem which is the brain tumor, and he will, when he reach back home, he will have no further problem of brain tumor. So these are few messages which I wanted to convey you through this camera by introducing these people who are here in this hospital for many days. ایک آخری کوشچن آپ سے کہ آپ 3 دن آپ نے کروایا یہاں پہ, کسی نے کوئی آپ سے پیسے کوئی چیز؟ نہیں, کوئی پیسہ نہیں ہے مجھے, کیونکہ جب میں نے کلپس دیکھیں تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ بالکل فری ٹریٹمنٹ ہے, فری رہائش ہے, آپ کا صرف ٹریولنگ ہے, نتھنگ ایلس. تو وی آر ویری ہیپی ہیئر. اینڈ یہاں پہ بھی بالکل گھر کی طرح کا ماحول ہے, اور ماشاءاللہ بڑا واسٹ ماحول ہے, بہت اچھا ہے. اور پیر صاحب نے جو ہے وہ کافی کوآپریٹو ہے, ایوری از ویری کوآپریٹو. بہت شکریہ. Operation theatre keeping in view the future need. The operation theatre, this is the pre-operation room, which is quite a big, because massive room, which needs proper furniture with the equipment which is required for pre-operation, including the attached baths. So we need to have
beds here, we need to have equipment, we need to have oxygen cylinders, and so on and so forth. We will put everything on our website, which is www.walkwelfare.org. So please go through that website and find what we need for this hospital. Now I'm taking you to the massive operation theater. You haven't seen such a big operation theater in Pakistan, but I have not seen from my eyes. Look, in the private hospital in the rural area where this big operation theater is, you can have even 2-3 operation theaters within this one big operation theater. But again, it needs loads of equipment through which this operation theater can work effectively. So we need to have all equipments for the operation theater to have at least 2-3 major things: the minor surgeries, the delivery cases for the females, which is extremely required in this area, and the need of this area is. Now we are coming out from this operation theater and moving towards the main entrance for the emergency patients who come from this door, enter into this hospital to seek the emergency treatment. And this is the waiting area, which needs chairs, which needs the basic facilities. Fans are not there, lights are not there, so we need everything, the furniture, fixture, basic things which are required for the waiting area. Say, for example, if patients are coming with their kids, so there should be some equipment which can keep those kids busy when they are accompanying their parents. Now we are moving ahead towards the pharmacy. So we'd like to provide the free medicines to patients who are visiting this hospital. It's quite a big pharmacy room which can meet the requirement of the ground floor only. We have the same size of room upstairs for the first floor pharmacy, and then we have the same size of room on the second floor for the second floor pharmacy. So each floor will have its own pharmacy. So the thing is that we need medicines to provide these medicines free of cost to all patients who are visiting Munshi Muhammad Ramzan Khan Free Hospital through Walk Welfare Foundation. So please come forward, donate generously, support us, support Walk Welfare Foundation, and give your generous donation to meet all these expenses, to meet this hospital, to build this hospital, and to complete this hospital in all respect. After coming out from the operation theater, this is the room where I'm entering at the moment. My cameraman has already entered. This is the ICU room, when the patient will be shifted from the operation theater to the post-operation room after recovery. The patient would be transferred to the ICU for a certain time period where the patient would be properly looked after by the trained nursing staff and doctors. We have 2 ICU rooms. They are adjacent for 4 patients who can go straight away to these rooms after post-operation recovery room. This is the second room where I'm taking you now. This room has got the attached bath also, and this is again, it's a 2-bed ICU room, and then we have got the doctor's room and the nursing staff who will sit here to monitor their patients for a certain time period for which those patients would be here. And again, the doctors have their own attached bath. Well, you can see now, I'm concluding after visiting the whole hospital. I've shown you the whole hospital. I will conclude in a way that this hospital has been designed in all respects. It's a complete hospital. You have seen from your own eyes that this hospital is complete in all respects. But the infrastructure is here off the ground floor, but there's no machinery, no equipment, no furniture, fixture, nothing is here. It needs your help, your support to come forward and support this hospital, to give it a shape, to give it a benefit to the local locality, local people who can come down and get this benefit instead of lying on the floors and sitting on the floors. Thank you. Brothers and sisters, now I have been moved into the area where the 2 times food is provided to people who have come with patients, and they are sitting in the lobby, main lobby area, where the 2 times food is provided, lunch and dinner. It's hygienic, in fact, food is provided because, this hospital is situated in
the area where there's no restaurant and no hygienic food is available. So the food along with the dessert is provided twice in a day as lunch and dinner. The cost on each person food is £3. So I would request all brothers and sisters to please donate generously, and at least you can donate £3 for one person's food. Again, it's a big need of providing food to people who are here from far-flung areas and they have their own food arrangements, and they need people to come forward and provide them or help them to provide them the food. So I request once again to come forward and donate generously, and £3 is the cost of food for one person. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are at the event where the Walk Welfare Foundation's chairman, Peer Usman Ghani, along with distinguished guests, is going to deliver wheelchairs to the patients who are disabled and cannot walk, to make them mobilize. So for the mobility purposes, he is distributing these chairs. पीर साहब, इसका क्या पर्पस क्या है ये व्हीलचेयर्स देने का? जी बेसिकली तो गरीब और नादार लोगों के लिए जो माजूर है उनके लिए कि ताकि वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी, जब तक वो उनकी डिसेबिलिटी ठीक नहीं होती, वो अपनी व्हीलचेयर इस्तेमाल कर सकें. So to make them mobilize and to make them workable, so these chairs, wheelchairs, are handing over to those people. अंसारी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये जो एक व्हीलचेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम है? इस बारे में मैं तो यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये तो अच्छी बात है, ये पीर साहब अपने पास से कर रहे हैं. ये सब लोगों के लिए मोटिवेशन है, दूसरे लोगों के लिए भी पूरी दुनिया में, कि अगर इस तरह के लोग काम करना शुरू कर दें, ख़ासकर इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मामलात हमारे हल हो जाएंगे. तो The cost of this wheelchair is 12,000 Pakistani rupees, which is almost equivalent to 95 pounds, British pounds. And because these chairs are of very good quality, these are not the ordinary chairs. The person who will be using this wheelchair can himself, take this chair and can do his own work or can do her own work by using this wheelchair. So this is not the ordinary wheelchairs. So we again request you to kindly come forward and donate as many wheelchairs you can, because Peer Sahib has donated so far more than 150 wheelchairs. These are few which are going to be delivered today, and patients, you will see in a couple of minutes that the patients will come forward and Peer Sahib will be delivering these wheelchairs. You can see this old man. He has been taken here by his attendants on their shoulders without having anything. So this gentleman is going to be given this wheelchair by Peer Usman Ghani and the distinguished guests, and it would be very easy for him now to be taken at home. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम. आप कैसा महसूस कर रहे हैं व्हीलचेयर लेने? अच्छा कर रहे हैं. खुश हैं कि आपको अब व्हीलचेयर मिल गया, आपको कंधों पे उठाकर नहीं लाना पड़ेगा? खुश है, बड़ा खुश है. आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? इस मौके पे साईं माइन था मेरा था बांह हाथ छुट जाए. मैं तुहाडे उत्ते बड़ा खुश है, आखिर दुनिया खुश है, तुहाडी तारीफ कर सकता, चंगे बंदे. This gentleman is very happy, and he's saying that whatever I have, I can praise you because of this this activity which you are doing. So it's free of cost wheelchairs which are being provided from Peer Usman Ghani. It's a gift from him for the people who are disabled, who cannot move, to make them move and to make their life easy, so they can do their day-to-day activity at their own. So this gentleman is very, very happy now. छोटे
Hello, my name is Roseman and I live in Toronto, and I am suffering from rheumatoid arthritis. This was diagnosed last year by my doctor, and there are days that I just can't get up from the bed. When I sit on the couch, I cannot get up, and I was referred to Usman by my brother. He just called me 3 days ago and he says, I've heard of Usman and you should just go and see him. So that day I just couldn't get off bed, but I tried my best and I came here. I've been treated by Dr. Usman. He's not charged me a single penny. All he told me was to put $5 in my place of worship, and that's what I've done. He's treated me 3 times. This is my 4th visit, and before I just couldn't get up from the chair. Like I would hold somebody to get up, like 2 people sometimes, or it's so painful, but now I can just get up on my own, and I'm really happy. I would recommend him to anybody. He does not give me any medication. He just prays, and there's some oil that I massage on my leg when I go home too, just warm it up and massage, and the results are just amazing. He's a very good person, very friendly and very helpful, and I would recommend him to anybody and everybody, and he is just amazing. Assalamu alaikum. My name is Major Javed Iqbal and this is my wife Usman Hospital. I am serving in Pakistan Army Engineers from last 20 years, and my qualification is I have done the Masters in the Civil Engineering. My wife has started having different problems 4 years back. Initially we never came to know what is the issue, but later on, when we undergone through CT scan and all the tests, then we came to know that she is suffering from intestinal cancer. And the tumor she got initially, we were very worried and we will never know what to do. The doctor suggested us to operate, so we went under operation. Later on, she went a complete session of 6 chemotherapy sessions for 4.5 months. And after this treatment of operation and chemotherapy and approximately 9 to 10 months, the life was a bit comfortable, but after 9 to 10 months she again started having different problems in her body regarding pains. And when we gone again the detailed test, CT scan and all these,
we again came to know that the cancer appeared on some other portion. And again the doctor suggested to undergo some operation, and we again undergone the operation, and the next 6 sessions of chemotherapy started. In this way we had 2 major operations, 12 sessions of chemotherapy, and after the second session of chemotherapy, just after 4 months, again she got started having problems in more than 3 to 4 parts of her body regarding the CT scan reports, which were showing that she is having again the signs of tumors in different parts of the body. At that time I was really hopeless from the medical treatment side, because after undergoing 12 chemotherapy sessions and so much treatment, my wife, I know her veins were really shrink to the end because of these chemotherapy sessions. But when I came to know, at that time I was praying from Allah that that there should be some help from Allah. And at that time I got a number from my colleague, Usman, and he told me about his way of treatment. I first contacted him, and during my first contact he gave me a detail. He asked me her name and her mother's name, and just after 10 to 15 minutes I got the information which she was facing from last 3 years, and that was perfectly alright, that was perfectly okay. Even word to word of that information was perfectly okay, and that was astonishing for me. And then I asked him how to undergo, will she be alright? He said, yes, if my Allah wills, she will be perfectly alright, inshallah. And she will never face, she might face some other problems in life, but she cannot face the problems regarding the cancer. We started this treatment, and this treatment, I asked him again that from which is the method of this treatment, or what are the holy verses, or what you use, what you read during the this dam process. What I came to know from him, that is totally from the Quran, totally from the Quranic Majid. And then I got my belief in that if it is from the Quranic Majid, then either no Muslim in the world can deny what to talk of me. So I started getting treatment of my wife with this theme that this is done from the Quranic Majid. And after getting the treatment 3 to 4 months, I undergone different tests, medical tests, especially CT scan and all these tests. And Alhamdulillah, after that time, there was no test which was showing any problem. And today, 2.5 years have been passed. And I know before 2.5 years, when she was traced, third time some problems, people thought that she will not survive for more than a month or 2 plus. But I know my Allah has given her more than 2.5 years healthy life, and she is alhamdulillah perfectly healthy and living a wonderful life with her kids. I must say here that the treatment which is given by Usman is a dedicated worker and a dedicated soul which is working for the humanity, because I had been contacting him from last 3 years and had never seen him taking even a single penny from any gentleman, and I had not seen him differentiating between the Muslims and non-Muslims. I learned from him, I learned a belief from him that this Quran, this Deen Islam is for the Deen Insaniyat. पिछले 3-4 साल से हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। जब से कैंसर डायग्नोज हुआ था, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, ऑपरेशंस हुए, लेकिन रिज़ल्ट हर दफ़ा उम्मीद होती थी, लेकिन रिज़ल्ट उस तरह हमें नहीं मिला। और कीमोथेरेपीज़ हुई, और पीर उस्मान का हमें पता चला। जिस वक्त हमें भी, जब पीर उस्मान साहब का 2 साल पहले किसी ने, इस सारे प्रोसेस से पहले किसी ने हमें बताया था, और हमारे हाथ एक सीडी आई थी जिसको हमने देखा और मजाक उड़ाया, और हमने उसको एक साइड पे लगा दिया। उस वक्त हमें इस चीज़ पे बिलीव नहीं था, हम दोनों मियां बीवी खूब हंसे। लेकिन जब हम पे मेडिकल के तमाम रास्ते
बंद हो गए, तो अगेन जब हम इस चीज की तरफ वापस आए कि अब क्या किया जाए, तो मेरे हस्बैंड का ज्यादा बिलीव इस चीज पे था कि अब यहाँ से मेडिकली तुम्हारा इलाज खत्म हो गया है, अब जो भी शफा होगी वो अल्लाह के कलाम के थ्रू तुम्हें होगी। दोबारा हमने पीर उस्मान से दोबारा नहीं, मतलब उसी पर्सन से हमने जब कांटेक्ट नंबर लिया और पीर उस्मान से हमने कांटेक्ट किया, वो हज पे थे और बिल्कुल ही एक अननोन पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं और वो वहां पे हज पे बैठे हुए, मीना में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें फुली रिस्पॉन्स किया और वहीं पे बैठे हुए उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आपकी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है उन्होंने हमें मेजर नासिर के पास भेजा और उन्होंने हमारा इलाज शुरू किया। और एक बात जो मैं सबसे शेयर करती हूँ, आप लोगों से भी करना चाहूंगी कि पीर साहब ने जिस दिन हज से वापस तशरीफ लाए हैं और हम लोगों ने उन्हें फोन किया है और उनकी बेइंतहा मेहरबानी कि वो अपनी थकन का एहसास किए बगैर, हमें जाने बगैर, ना वो हमें वो किसी तरह से भी, सिर्फ हमारा उनसे फोन पे कांटेक्ट था, वो आए हैं, उन्होंने हमें दम डाला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शफा मिली, उन्हीं के हाथों शफा मिली अल्लाह के कलाम से। और आज मैं भी उनकी शागिर्दी में हूँ, उन्होंने मुझे अज़न दिया और आज मैं भी उनके साथ लोगों की खिदमत कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा शहजाद हसान है। अब मुझे वाइट ब्लड सेल्स का मसला था, एक्सेस में हो गए थे, तो मेडिकेशन भी हमारी जारी थी। तो हमें पीर साहब का, बल्कि पीर साहब खुद तशरीफ लाए थे पहली दफ़ा हमारे घर पे ही, तो इन्होंने बताया था कि 10 दम की ज़रूरत है और इन्होंने कहा था कि 3 दमों के बाद जो है रिपोर्ट इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो अल्लाह का फजल था, पीर साहब की दुआ थी माशाल्लाह से कि 3 हफ्ते बाद रिपोर्ट सारी क्लियर थी और मैं माशाल्लाह से अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, माशाल्लाह से कोई मसला नहीं है। ये आपकी बेटी है जी? क्या मसला है इसका? इसका ब्लड कैंसर है। अच्छा, आपने इसका पहले इलाज करवाया क्या? जी, मैं इसका कम्प्लेक्स नूरी अस्पताल से इसका इलाज करवा रही थी। फिर किसी ने बताया कि दम इधर डालते हैं पीर साहब। कब से आ रही हैं आप? मैं इसका 10वां दम है। अच्छा, आपको फर्क महसूस हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मेरा आबाई गांव चक नंबर 173 मराद है। आज से 1 माह पहले मुझे फालज का अटैक हुआ दाईं साइड को, तो नज़र भी मेरी बंद हो गई थी और सारी साइड भी रुक गई थी। अटैक के दूसरे दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि पीर उस्मान कैंपुर में दम करते वहाँ ले जाओ, तो अल्लाह के फजल करम से हम दूसरे दिन इधर आ गए। तो पहले दिन ही 5 मिनट के टाइम में बाबा जी ने मुझे दम करके चलना शुरू किया। अल्लाह ताला के फजल करम से अब मैं अपनी मोटरसाइकिल पे दूसरा मंगल जब दम किया अपनी मोटरसाइकिल पे मैं आता हूँ और वापस जाता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल फिट हूँ। बोलो। अच्छा, मेरे वालिद साहब हैं, इनका नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है और इनको पाकिस्तान में गुर्दों का मसला हो गया था। डॉक्टरों ने इनको डायलिसिस रिकमेंड किए थे। उसके लिए ये हॉस्पिटल 3 दफ़ा गए पाकिस्तान में, फिर मानचेस्टर आए पाकिस्तान से, 2 दफ़ा मानचेस्टर हॉस्पिटल गए। हज़रत साहब का किसी ने हमें बताया था लंदन से, मेरे चाचू हैं लंदन रहते हैं, और ये डायलिसिस की वार्ड में वहाँ पर दाखिल थे। तो हज़रत साहब ने कहा कि आप इनको मेरे घर लेकर आए। मैं इनको उस रात इनके घर लेकर गया, तो हज़रत साहब ने इनको दम किया और हमें तेल और पानी दम करके दिया। और हज़रत साहब ने कहा कि 20 दफ़ा इतवारों को अगली इनको लेकर तो बनले गौसिया सेंटर में। तो आज माशाल्लाह यहाँ पे हमें 4था दिन है। आखिरी मंडे को डॉक्टर ने फ़ोन करके इनके बारे में हमें जो आखिरी रिपोर्ट दी वो ये थी कि इनके गुर्दे माशाल्लाह 10% पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये इस हालत में काम करते रहे तो ये सस्टेन कर सकते हैं, मतलब इनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनकी हालत बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ आने का हमें कोई मुआवजा नहीं है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। यहाँ पे तकरीबन 200-250 लोग हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दिया जाता, कोई पीर साहब को कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो इंसान ने देना वो हदिया मस्जिद को है और कुछ नहीं। तो मस्जिद भी इतने नहीं है। मस्जिद, ये मस्जिद का सेंटर है, गौसिया मस्जिद के साथ गौसिया सेंटर बर्नले एबल स्ट्रीट में।
जगह यूज़ होती है इसलिए माशाल्लाह काफ़ी लोग इधर से शिफा ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस सेंटर को कायम रखे बुजुर्गों का ये मेरे वाले साहब हैं नहीं ये इंटरव्यू दे अपना अपना इंटरव्यू मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है मैं गुर्दों के मर्द में मुब्तला था रोड़ा नहीं है सब सिर्फ शिफा हो रही है डॉक्टरों ने डायलिसिस तजवीज़ की है यहाँ पर भी अस्पताल में लेकिन मैंने आपके बारे में सुना तो मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में आया आपने दम किया पानी दिया तेल दम करके दिया तो मैं काफ़ी शिफा हो गई अब डॉक्टर कहते हैं डायलिसिस नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हज साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਨਾ फीस कोई किसी किस्म की कोई फीस नहीं कोई नजराना नहीं कुछ नहीं अल्लाह आपको जज़ा दे दुआ करो आखिरत वास्ते हज साहब आखिरत वास्ते रोई तो अल्लाह खैर करे अस्सलाम वालेकुम और जिसकी वेबसाइट है www.peerusman.com दूसरी वेबसाइट है www.walkwelfare.org